Hello everyone, what's up? How are you all? I'm back again with another short video on auditing concept, that is audit evidence. If you are new to this channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon beside it so that you get notified whenever I post new updates. I keep uploading short audit concept videos. जो भी टर्मिनोलॉजी मुझे लगता है कि ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर स्टूडेंट्स टू नो एंड अंडरस्टैंड, एंड दे जनरली फेस डिफिकल्टीज इन दोज कॉन्सेप्ट्स, तो उसके ऊपर मैं छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आती हूँ. एंड दिस इज वन इन दोज दैट सीरीज. आई हैव ऑलरेडी हैड वीडियोज ऑन true and fair view, assertions, management assertions, then audit procedures, professional skepticism. I have a video on difference between management and those charged with governance, and a lot of such videos on internal control. So if you have confusion in any of these terminology, you can just go and watch these videos, and I make sure that I keep these videos short and to the point. जितना बताना है सिर्फ उतना ही इस वीडियो में मैं बताती हूँ, ताकि कि आप जो कम से कम समय में आप पूरी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सको. So in this video मैं क्या डिस्कस करूंगी? I'll be discussing the meaning of audit evidence, number one. Then what constitutes audit evidence? होता क्या है actually? What should be the nature of audit evidence? We are talking of the auditor obtaining audit evidence. तो वो audit evidence कैसा होना चाहिए? Then we'll be talking about the objective of SA 500, objective that the auditor has to achieve as stated in SA 500 regarding audit evidence. So let us start first with the meaning. Before going into the technical definition, I just want you all to imagine a scene of a courtroom. ठीक है, किसी भी मूवी से आप इमेजिन कर सकते हो कि एक कोर्ट है, देन देयर इज अ जज सिटिंग एंड देयर आर टू लॉयर्स हु आर फाइटिंग एंड डिबेटिंग अगेंस्ट ईच अदर. So this lawyer of the accused person जो guilty है of the crime, say any crime, and that lawyer is pleading to the judge that my lord, my client is not guilty of this accused crime. I am assuring you this, that my client is not guilty. Then what does the judge says? The judge says to the lawyer कि कोर्ट भैया, तो जो कोर्ट है वो सुनी सुनाई बातों के आधार पे वर्डिक्ट नहीं देता है. द कोर्ट नीड्स एविडेंस. कोर्ट को क्या चाहिए? सबूत, या फिर आप कह सकते हो कोर्ट को एक एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, जिसके बेसिस पे वो अपना वर्डिक्ट दे सके. आपने कह दिया कि क्लाइंट गिल्टी नहीं है और कोर्ट मान लेगा, मैं मान लूंगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? इफ यू रिमेंबर दैट मूवी ओ माई गॉड, जिसमें परेश रावल जी अपने लॉयर से जज को कहते हैं कि यू नो, एक्ट ऑफ गॉड से मेरी शॉप को नुकसान हो गया. ऑल दोज हु हैवंट वॉच दिस, यू कैन जस्ट स्किप द वीडियो फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स. तो उस मूवी में भी परेश रावल जी यही कहते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड से मेरी दुकान को नुकसान हो गया. तो कोर्ट में जज क्या कहते हैं? जज सेज कि प्रूव इट. आप मुझे एविडेंस ला के दो कि वो एक्ट ऑफ गॉड से आपकी दुकान को नुकसान हुआ है ना. तो कोर्ट में भी एविडेंस की बात होती है. तो चलो, ये तो हो गया एक लीगल एस्पेक्ट. नाउ लेट्स कम टू ऑडिट. ऑडिट में ऑडिटर का काम क्या है, आप मुझे बताओ. ऑडिटर का काम है ऑडिट ओपिनियन इशू करना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू गिव एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट. ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना, वेदर दे आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, एंड वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स और नॉट. दिस इज द जॉब ऑफ द ऑडिटर. नाउ टू गिव दिस ओपिनियन, ये भी आप एक वर्डिक्ट से रिलेट कर सकते हो. जैसे कोर्ट में जज एक वर्डिक्ट देता है, राइट? तो वैसे ही ऑडिटर एक ओपिनियन दे रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? It is important because a lot of stakeholders of the company are going to rely on your audit report and make very important decisions, maybe investment decisions, maybe to merge with the entity, maybe to acquire the entity. तो ऐसी कई सारी डिसीजंस लोग लेने वाले हैं आपकी ओपिनियन के ऊपर बेस करके. such an important responsibility on you. So you cannot just issue your opinion without having solid audit evidence. तो अब ऑडिट एविडेंस हुआ क्या? इट इज नथिंग बट सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर ऑडिटर की जो कंक्लूजन है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज बेस्ड, एंड अपॉन दैट कंक्लूजन द ऑडिटर फाइनली इशूज एन ऑडिट ओपिनियन. Fine. So let's see the technical definition. It is information used by the auditor to form an audit conclusion on which the auditor's opinion is based. कंक्लूजन और ऑडिट ओपिनियन में क्या डिफरेंस हुआ? कंक्लूजन मीन्स
कि आपको अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स के ऊपर अलग अलग कंक्लूजन्स मिले, राइट? अलग अलग आपको ऑडिट एविडेंस मिले, इन्वेंट्रीज के ऊपर मिला, ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर मिला, पेबल्स के ऊपर मिला, सेल्स परचेज, सबका आपको ऑडिट एविडेंस मिला। ओवर हियर गाइस आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट, हालांकि ऑडिट एविडेंस सभी तरह की ऑडिट में रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? नाउ आपको अलग अलग एलिमेंट्स के लिए यू हैव ऑब्टेन्ड अ लॉट ऑफ ऑडिट एविडेंस, सबके लिए एक एक कंक्लूजन है कि भैया इन्वेंट्रीज ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक है, देयर सर्टेन प्रॉब्लम विद द परचेजेस एंड द क्रेडिटर साइड। तो ऐसे करके आपने कंक्लूजन हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑब्टेन किया। नाउ देयर इज अ फाइनल ऑडिट कंक्लूजन कि एग्रीगेट पिक्चर क्या है। इन एग्रीगेट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। On that aggregate conclusion, the auditor finally issues an audit opinion. If you want to know what are the different types of audit opinion, I have also recorded one video for that. I'll put the link in the description box. You can go and watch that also. Types of audit opinions क्या क्या होती है। अभी बात करते हैं हम components की। Okay मैम, now you explained us कि कुछ information होती है, किस टाइप की information को हम audit evidence कहते हैं। तो इसके दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो हो गया आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप ऑडिट करने वाले हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप ऑडिट करने वाले हो किस चीज से बने हैं? वो बने हैं कुछ अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स हो गए, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी इफ एप्लीकेबल। तो ये 5 कंपोनेंट्स हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अब ये बने किससे? इसके कुछ अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि जर्नल रजिस्टर्स हो गए, आपके लेजर अकाउंट्स हो गए, ट्रायल बैलेंस हो गया। ये सारे जो होते हैं ये होते हैं अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब जर्नल एंट्रीज भी जो कंपनी में पास की गई, जर्नल ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड की गई, वो भी बेस्ड थी कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर जिनका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहा होगा। मे बी अ परचेज इनवॉइस, मे बी एनी काइंड ऑफ इनवॉइस इशूड बाय अ लॉयर फॉर लीगल एक्सपेंसेस। तो कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, कोई अग्रीमेंट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसके आधार पे ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया। So these are the information which is contained in your accounting records. Next, if I talk about the second component, that is other information. This other information is obtained externally by the auditor. It is obtained by the auditor. It is not contained in the accounting records, but it is obtained by the auditor. So if I talk of example of information contained in accounting records, you can say journal registers, ledgers, invoices, vouchers. And if we talk of other information का एग्जाम्पल हो गया एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर फ्रॉम एनी एक्सपर्ट, या कुछ एक्सटर्नल कंफर्मेशंस एज पर ऐसे 505 अगर ऑडिटर ने ऑब्टेन किया कोई कंफर्मेशन, दैट कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रूड एज ऑडिट एविडेंस। सो द 2 components of audit evidence are information contained in the underlying accounting records on which your financial statements are based. Second हो गया other information obtained by the auditor, right? अभी बात करते हैं मैम नेचर। What should be the nature of audit evidence? किस प्रकार का ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को ऑब्टेन करना है? तो आप लोग को पता होगा कि ऑडिटर को ऑब्टेन करना है कैसा? सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस as well as appropriate audit evidence. So the audit evidence should be sufficient as well as appropriate. Sufficient मतलब क्या होते हैं? नाम से समझ में आ रहा है। Sufficient denotes the quantum of audit evidence. How much audit evidence you need to obtain. Now this depends on the size and scale of the business. अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो obviously you have to obtain more audit evidence there. But if it's a small scale enterprise, a proprietorship concern which is very small in scale, transaction ज़्यादा नहीं है, तो accordingly कम audit evidence obtain करना है. So it depends on the nature of the business, of the client's business, the scale, how many branches are there, and a lot of other different factors. So sufficiency basically denotes the quantity, how much audit evidence to obtain, and appropriateness denotes the quality of audit evidence. खाली क्वांटिटी से कुछ होता है क्या? नहीं, वो क्वांटिटी की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। क्वालिटी मतलब क्या हो गया? क्वालिटी मतलब हो गया क्या उस ऑडिट एविडेंस के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, क्या जो एक्सटर्नल कंफर्मेशंस हमने ऑब्टेन की क्या वो इंडिपेंडेंट पर्सन से थी, मतलब जिनसे भी हमने कंफर्मेशंस ली, वर दे नॉलेजेबल पार्टीज, were they actually willing to submit the external confirmations? A lot of factors decide the relevance and reliability of the audit evidence. इसको कहते हैं appropriateness. अब मैम कैसे पता चलेगा कि जो audit evidence हमने obtain किया it's sufficient and appropriate or not? This is a very big question.
हमने ऑब्टेन कर लिया. नाउ हाउ डू वी जज दिस? You apply your professional judgment here. As per SA 200 में दिया है that auditor should apply the professional judgment to evaluate whether sufficient and appropriate audit evidence has been obtained or not. So this is about the nature of audit evidence. Now the last thing, let us talk about the objective as stated in SA 500. तो ऐसे 500 कहता है कि ऑडिटर को करना क्या है? ऑडिटर को ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करने एंड परफॉर्म करने हैं. If you want to know in detail about audit procedures, I'll put the link of the audit procedures video also. You can go watch that also. Audit procedures ऐसे डिजाइन करने हैं एंड उनको परफॉर्म करना है जिससे ऑडिटर को जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है वो ऑब्टेन हो सके और उसके ऊपर वो अपना ओपिनियन को बेस कर सके. So that is about the objective as stated in SA 500 that you have to perform and design and perform such procedures जिससे कि आप sufficient as well as appropriate audit evidence को obtain कर सकते, right? So that's all with audit evidence. I have explained the meaning, I have explained the components, the nature of audit evidence, sufficiency और appropriateness क्या होता है, and also in short the objective as stated in SA 500. I hope this video was helpful to you and you could understand what is audit evidence. If you have any comments or any queries, please write down in the comment section below, and also let me know what other audit concepts you want me to come up with. So I'll record videos and I'll share it with you all. Thank you so much everyone. God bless you.